Hello students, Sanjay Purohit here. We would like to see poem Animals of First Flight, poem number 7. And first of all, we would like to see summary as usual what we have been doing. In this poem, the poet tells us that he feels more at home with animals than human. He would like to have some companies of animals rather than that of human being, whom he finds complicated and false. Usually it happens that the things that we are very close to, very nearby, in a proximity with, I think we don't like. And over here, the poet is nearby animals. Reason behind that, human being has lost some quality, not only lost, but they have dropped down either by negligency or perhaps due to their careless nature. So, if we can try this poem, so first of all, let's see the summary. The poet told us that animals are better than human beings as they are calm and independent. Human beings have lost true meaning of life and become mechanical, while animals on the other hand still enjoy natural life in the lap of nature, and they don't complain or cry about their condition. Not only that, they do not keep awake in the night and weeping for their sins. That generally human being having a tendency to cry over their right splitting milk. They do not discuss about God in a manner that makes others sick. None of the animals are dissatisfied or crazy and greedy about owning things. They are always free. They are not crazy and money minting like human being, and they are after the money, and in doing so they are dissatisfied. They don't kneel down and show their respect to another or to their ancestor living along in the past. Human being, they bow down to their parents, to their guru, to their forefathers. But here for animals, one cannot say it is a not a good virtue or not a good quality, but they believe in equalism, not to bow down to anybody. They are not happy, neither sad, but satisfied with the resources what they have got. Human beings are quite crazy, chasing material goods, and not only that, but they are greedy as well. In spite of having certain things, they are having hoarding, right? And not only that, they are collecting at will. The poet realizes that humans have lost their virtues, their good quality, and these virtues, however, are still present in animal. So one question arises: where do animals get this quality? The poet questions: if we negligently drop the virtues or good quality, and animals might have picked them up. ये पोएट को डाउट है, पोएट को ये थोड़ा राइट डाउट है कि ये हमारी जो अच्छी क्वालिटी जो हमने ड्रॉप कर दी राइट ड्यू टू अवर नेग्लिजेंस राइट, वो उन लोगों ने बरकरार रखी. नॉट ओनली दे हैव पिक्ड अप बट दे राइट consistently applying that. So Walt Whitman thinks that he can turn and live with animals very comfortably. Reason, they are very calm and self-contained. He says that he can stand and look at them for a long time. He can gaze them at a long time. He can stay with them for a long time. The poet says that the animals do not labor unnecessarily. Likewise, human being, drudgery जिसको बोलते हैं, drudgery, and complain about their condition. They do not repent or remorse, पश्चाताप करना. They do not repent or remorse for their sins because they don't believe in sin or पुण्य और पाप. या तो राइट प्योरिटी, पायसनेस, होलीनेस, या तो सिंस में बिल्कुल नहीं मानते. They don't trouble their companies discussing their duties to God.
जबकि हम लोग रिलीजन में काफी बाइफरकेट करके लड़ते रहते हैं, हमेशा रिलीजन के नाम पे ह्यूमन बीइंग लड़ते हैं. My religion is best, like my God is best, like that, but God is so low. They are not dissatisfied with their condition. They never cry, they never dissatisfied. And animals don't have mania or mental condition of owning the things. इनको अब चीज अपने नाम पे करने का कोई शौक नहीं है. Where they go, they enjoy, considering that place time being for themselves, of themselves. Sorry. Walt Whitman says that no animal kneels to another, not even to an unknown ancestor of his own who lived in the mortal world thousands of years ago. अपने forefather, अपने ancestor किसी के सामने झुकते नहीं. That doesn't mean they are arrogant, but ऐसा मानते ही नहीं है. Neither of them is respectable nor is unhappy either. The animals saw their relation with the poet and he accepts them gleefully. They bring him tokens. Tokens मतलब के virtues. बहुत अच्छा word है tokens. वो हम लोग token देते हैं वो नहीं. Tokens means virtues, good quality. और virtues का antonym है vices, vices, of himself, which they have in their possessions. The poet is surprised to see those tokens, and he thinks ultimately what he thinks, that they have got them already, but at last he concludes that he had dropped down that quality somewhere unknowingly. ऐसा पोएट का मानना है. अब हम लोग पोएम की राइट क्वालिटी वाइज जाएंगे, राइट, तो देखेंगे कैसे हम लोग देखते हैं. एनिमल्स, पहले हम लोग लाइन वाइज जाएंगे. आई थिंक I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Placid का मतलब first of all very calm and quiet, and self-contained का मतलब independent. Self-contained का मतलब independent, placid मतलब very calm and quiet. I stand and look at them long and long. जो हमने summary में देखा, poet not only would like to stay with animal, but they would like to gaze, they would like to stare, not glance. Glance and gaze to opposite word. Glance मतलब temporarily देखना, gaze मतलब टुकुर टुकुर करके देखना. I stand and look at them long and long. They don't sweat and whine about their condition. Sweat मतलब worrying and whining मतलब complaining. WHINE, whining. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. वो कभी कभी राइट ऐसे उनको नींद नहीं आती हो, रात को जागते पड़े रहते या तो जल्दी उठ जाते, एंड दे आर वीपिंग एंड क्राइंग राइट ओवर देयर सीन्स. ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता. नेवर. दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड. और वो लोग कभी अपनी ड्यूटी राइट ऐसा नहीं दिखाते कि हमको ये गॉड को वर्शिप करना है, वो गॉड को वर्शिप करना है, राइट. नेवर शोज दैट काइंड ऑफ राइट particularly aspect of showing off, जो उनमें नहीं है, हमारे में है. ऐसे भगवान को मानते हैं बट उसके साथ साथ बुरे कर्म भी करते हैं. Not one is dissatisfied by what they don't have, and not one is demented with the mania of owning the things. बहुत अच्छी लाइन है. They are not dissatisfied. They are completely satisfied what kind of resources they have. जितना है उसमें खुश है. And not one is demented. Demented मतलब behaving irrationally due to anger or excitement. इसको हम लोग बोल सकते हैं crazy, right? Insane, पागल. और mania का वर्ड भी, mania का मीनिंग भी क्या होता है? क्रेज. उनको ह्यूमन बीइंग जैसा क्रेज नहीं है कि वो एवरी नाउ एंड देन कोई चीज के पीछे भागे, राइट, अपनी चीज अपना बना ले, अपने नाम पे एसेट्स कर दे, प्रॉपर्टी कर दे, सॉरी, ये सब अपने नाम पे कर दे. ओन करने का राइट उनका बिल्कुल भी नहीं है. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. जैसे हमने समरी में देखा, दो बार देखा है इनफैक्ट, ऐसा देखा कि वो लोग कभी किसी को बोट डाउन नहीं होते. They never go down on knees. You might have never seen any pictures. वो किसी को झुकते हैं या तो किसी को बोट डाउन करते हैं. Not to their own kind,
nor to their ancestor or forefathers lived thousands of years ago. उसमें वो मानते ही नहीं है. हमको ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, but they believe in equalism, right? Not to bow down to anybody. They are all equal. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. और किसी को respectable मतलब भी यहाँ पे happy हुआ. Not one is happy, not one is sad over the whole earth, right? यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये वो लोग कभी सैड नहीं है, इतने एक्सटेसी या तो ओवरजॉयड भी नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह. ह्यूमन बीइंग को टेम्पररीली ट्रांसिटरी कुछ मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, राइट? बाद में कुछ नहीं मिलता है, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी विल के अनुसार नहीं होता है तो वो रोते भी है, राइट? लाइक दैट. ऐसा उनमें कुछ नहीं देखने को मिलता है. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. इसलिए मुझे उनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, ये रिलेशन रखने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ये बॉन्डिंग अच्छा लगा, एंड आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट देम ग्लीफुली, joyously. They bring me tokens of myself. They bring me tokens of myself मतलब मेरा ही वर्च्यू मेरे से ले लिया हो ऐसा लगता है. They evince means firm, very confirm, right? Very confirm. They evinces that, right? Exhibit that, demonstrate that, they confirm that, right? Plainly in their possession कि ये क्वालिटी उनकी है ऐसा लगता है, right? From outside. और कभी कभी वॉल्ट विटमैन को ऐसा महसूस होता है, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स. उनको उनके पास ये वैल्यू, ये वर्च्यू, ये एग्जिबिट करने का तरीका कैसे उनके पास आया. तो उनको एक क्वेश्चन हुआ वॉल्ट विटमैन को कि क्या हमने पास ऑन किया था? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम? क्या हमने यही अपनी केयरलेसनेस की वजह से क्या हमने ये ड्रॉप कर दिया, राइट? ऐसा तो नहीं है. सो फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास से, राइट, ये हमको पता चलता है कि पोएट इज क्वाइट नियर बाय टू animals rather than human being because due to their quality they persist with, they continue with, though he is thinking that he might have passed his quality to them carelessly and then they might have continued this up till now and they have not changed. While due to money minting nature of human being, due to mechanized life we live in, right, due to complaining nature we do have, that's why we are losing that good quality what do we possess in the past. अब हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद पोएटिक डिवाइसेस. तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन. पहली लाइन हाइपरबोल है, मैंने वहां पे लिखा भी है, आप लोग देख सकते हो. हाइपरबोल रीजन, देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट दैट द पोएट प्रीफर्स टू लिव विद एनिमल्स. Number 2, I stand and look at them long and long. यहाँ पे दो है, long long पूरा का पूरा वर्ड, long is repeated for poetic effect तो repetition है, but sound of consonant l is repeated in the words like look and long for poetic effect. फिर अगर आप लोग CBSE की स्टाइल से देखेंगे, दो तीन लाइन में कंटिन्यूअसली दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट ऐसा आया. नीचे भी आप लोग देखेंगे नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन. तो ये एनाफोरा है, राइट? इट इज सेड टू बी एनाफोरा व्हेन अप टू 2 or 3 लाइन कंटिन्यूअसली, इफ इट इज रिपीटेड ऑन एंड ऑन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, इसको बोलते हैं एनाफोरा. अब आगे देखो, दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. तो यहाँ पे 3-4 फिगर ऑफ स्पीच है. पहला लिटोट्स, negation is used to convey an affirmative meaning or positive meaning that animals tolerate all their conditions. And tautology भी है, unnecessarily use of the word sweat and whine which suggests the same meaning of complaining. complain करने के दो तरीके, sweating and whining. यहाँ में onomatopoeia भी है, the word whine suggests the sound, and alliteration भी है. The sound of consonant th is repeated in the words they and there, they and there, पहली लाइन में. दूसरा देखो,
They do not lie awake in the dark and weeping for their sins. Weep मतलब cry. यहाँ लिटोट्स है. Negation is used to convey an affirmative meaning that animals bear all their conditions. और इसके बाद they don't make me sick discussing their duty to God. यहाँ पहले लिटोट्स भी है. नॉट आया ना, पर हर बार नो नॉट आए तो जरूरी नहीं कि लिटोट्स होता है. वो मुझे ध्यान से सुन लेना, उसका स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन होना चाहिए. तो नेगेशन इज यूज्ड टू कन्वे एन एफर्मेटिव मीनिंग दैट एनिमल्स आर फ्रैंक. एलिटरेशन भी है. डिस्कसिंग ड्यूटी, मेक मी फॉर पोएटिक इफेक्ट, ये आपका कौन सा हुआ? एलिटरेशन हुआ. आगे अभी देखो, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. Not one is demented with the mania of owning things. लिटोट से पहले तो negation is used to convey an affirmative meaning that animals are more normal than human. Tautology भी है. Unnecessary use of words demented and mania which denote the same meaning of being crazy. उसके नीचे भी not वाली लाइन है. Not one kneels to another. Kneels means to go down. Not to his kind that lived thousands of years ago, right? तो इसका भी हम लोग देखेंगे, thousands of years ago, right? तो पहले ये भी लिटोट्स भी है, हाइपरबोल भी है. Negation is used to convey an affirmative meaning, that animals are more normal than human. Not only that, यहाँ पे exaggeration भी है, overstatement भी है, that people bowed down to their ancestor who came before thousands of years. एक और है, not one is respectable or unhappy over the whole earth. आप लोग देखेंगे तो लास्ट not one वाली एनाफोरा की लास्ट. लिटोट से negation is used to convey an affirmative meaning that animals are more normal than human. एंटीथेसिस है यहाँ, बहुत अच्छा वर्ड है एंटीथेसिस. रिस्पेक्टेबल मैंने आपको समझाते वक्त बोला था, वो हैप्पी माना जाता है, and unhappy are used in the same sentence for poetic effect. Two contradictory words used together in a figure of speech, it is said to be what? Antithesis. So they show their relation to me and I accept them. Alliteration हुआ यहाँ पे th, they, them, their, ये poetic effect के लिए repeat हुआ, right? They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. देखो, तो they bring me token, यहाँ alliteration है, m is repeated, me, myself, p is repeated, plainly, possession, right? You can see that. Tautology है, unnecessarily use of me, right? आप लोग अगर यहाँ देखेंगे तो me and myself, right? me and myself, दो चीज आई, which denote the same meaning. एक और अच्छी फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनॉमी. मेटोनॉमी क्यों? The word token represents the virtue. The token is used for virtue. One word is used for the other. One word is substituted for other. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Virtues. Token के लिए यूज किया गया वर्ड, इट्स अ टॉटोलॉजी. यहाँ पे भी I wonder where they get those tokens. यहाँ मेटोनॉमी है, the word tokens represent the virtue. One word used for the other. यहाँ alliteration भी है. W is repeated in the word wonder and where. दोनों साथ साथ में बाजू बाजू में है. And ultimately in the end, अगर आप लोग देखेंगे तो, right, did I pass that way huge times ago and negligently drop? Negligent. तो इंटरोगेशन तो दिखता ही है. A question is asked not for the sake of an answer but the poetic effect. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरोगेशन. एलिट्रेशन भी है, राइट? एलिट्रेशन भी है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट डी इज रिपीटेड इन द वर्ड, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं, राइट, डिड एंड ड्रॉप. तो यहाँ पे आपको, राइट, ये एक और पोएम हमने समझा दी एनिमल्स के बारे में, राइट? वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएम आप लोगों ने देखा तो पोएम का समरी बता दिया, पोएटिक डिवाइसेस बता दी. परहैप्स यू माइट हैव एंजॉयड. दिस इज अ लिटिल बिट व्हाट इज द सार्केज्म,
on the human quality, that we have got this quality, but we have forgotten this quality, and now we have dropped down, right? And not only dropped down, but we now very careless about that to, right, accept it again, right? And hence that's why you can see that. Hence, thank you very much for listening and hearing and watching for this video. And those who are not subscribed my channel, please subscribe, right, on YouTube. I am Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Thank you very much.